शायद आपने भी ये न्यूज़ पढ़ लिया होगा, इन वन ऑफ द टॉप IIMs ओनली 80% स्टूडेंट्स गॉट समर प्लेसमेंट। एंड जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, कंसर्न्स वे रेज दैट क्या ये डिग्री अभी वैल्यूएबल है, एंड अगर टॉप बी स्कूल में यह हाल है तो बाकी के बी स्कूल्स में क्या हो रहा होगा, द कंडीशंस आर वेरी बैड एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर थोड़ा रियलिटी चेक एंड द रियलिटी समझने की ज़रूरत है। द फैक्ट दैट 80% स्टूडेंट्स गॉट समर प्लेसमेंट इज़ ट्रू, बट इसको जो ट्वीक किया जा रहा है इस न्यूज़ को, दैट 20% डिड नॉट गेट समर प्लेसमेंट, that is not true at all. What you need to understand is here the IIM placement process. अगर आपको IIM placement process नहीं है, then probably आप ये news believe कर लोगे, and the people who are raising these concerns as well are probably people who have never gone through the IIM placement process, or for example any B school placement process as well. Even in some of the top engineering colleges ऐसे ही placement process होते हैं. So that's the thing that you need to understand, that 80%, yes 80% को ही मिला है, but rest 20% are not people who will be unplaced. तो मैं आपको पहले IIM का प्लेसमेंट प्रोसेस समझाता हूँ, विच विल गिव यू अ ग्रेटर क्लैरिटी व्हाट दिस न्यूज़ आर्टिकल एग्जैक्टली डिनोट्स। तो IIM में प्लेसमेंट होती कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, IIM में प्लेसमेंट्स इट हैपन्स इन अ मैटर ऑफ 10 days। 7 to 10 days में सब कुछ रैप अप कर दिया जाता है। IIM अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 7-8 days में सब कुछ रैप अप हो जाता था, एंड इन दो 7-10 days क्या होता है, companies come in probably 3 or 4 rounds, the companies come to your campus. तो almost day 3 day 4 तक चलता है ये process, and most of the students appear for these in company interviews only during these 4 days, and बीच में कुछ दिन gap रहता है, like 1 or 2 days का gap भी रहता है, where the companies can also conduct their GD rounds or any telephonic interview if they want to. So वो सब मिला के 7-10 days का process होता है, and everything, the entire placement process is wrapped up in these 10 days. तो द थिंग इज, कभी भी कोई टॉप IIM हो वो नहीं चाहता कि ये जो प्रोसेस है अगर 10 days डिफाइंड है तो वो 11th डे पे जाए, बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ देयर रेप्यूटेशन। जब भी आप किसी टॉप IIM में जाओगे, यू विल नोटिस, एटलीस्ट आई नोटिस ड्यूरिंग माई टाइम, बिकॉज द कंडीशंस वेर प्रॉब्ली वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम, दैट कंपनीज का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको हायर करना है स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स आर नॉट अंडर प्रेशर, इट्स द कंपनीज हु वांट टू हायर बेस्ट टैलेंट, एंड एटलीस्ट कैंपस में जब तक आप हो वो सेफ इन्वायरमेंट है। प्रॉब्ली आउटसाइड द कैंपस जब आप लैटरल जाते हो वो इतना ईजी नहीं होता है, बट इन द कैंपस इट्स द ऑपोजिट, इट्स द कंपनीज हु आर कमिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे वांट टू हायर द बेस्ट टैलेंट, सो दे आर द वंस फाइटिंग फॉर यू. So because companies are fighting for you, it is very easy to complete the process in 7-10 days. But this time, yes, the market conditions are not the best. All the companies are hiring less in number, and that's why it's highly possible that you did not estimate it correctly, because all the companies hired less, you did not allow all the companies to come in, you thought the placement process will be over, and probably you missed out on some candidates because of that. And official declaration भी थी कि आपकी दिवाली holidays आ गए, so all the companies could not send their interview panels to the respective colleges. एक panel send करना पड़ता है हर company को to the respective college, and वो panels ready नहीं हो पाए because everyone was on leave as well. So that is also a reason that दिवाली के पहले वो placement process complete नहीं हो पाया, and there's no concern to worry at all. I'm pretty sure ये जो 20% भी थे, once the panel resumes, once everything settles down, everyone will get very good placement because they are from top B schools. वो definitely 1 lakh की above stipend पे ही जाएंगे, जो भी कंपनी मिलेगी उनको 1 lakh की above stipend भी मिल जाएगी, everything will go good. So there's no reason to worry at all, but yes, it's a matter of reputation that हम इसको extended placement period और extended placement day बोलते थे, and it's a matter of reputation that आप extended period पे वो आपका placement process नहीं जाए. You want to complete the placement process in the stipulated time, in the 3 days 4 days that you have allocated. And ये सिनेरियो हम लोगों के बैच में भी हुआ था. We were supposed to go for our internship in 2020, and suddenly the lockdown happened. So the companies who had hired in 2019, thinking about a different scenario, everything changed in a matter of months. And because everything was shut down, most of the companies were not prepared at all. So they had to cut some internship offers because their business was not running. So what work they will give to the interns? So इसलिए कुछ offers वहाँ भी revoke हुए थे. But let me tell you, all the offers जो उस time भी revoke हुए थे, even during the लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग द सडन लॉकडाउन, उन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली प्लेस कर दिया गया था इन डिफरेंट कंपनीज हु हैड ऑलरेडी हायर्ड फ्रॉम द कैंपस, बट दे स्टिल हायर्ड दोज कैंडिडेट्स हुज ऑफर्स वर रिवोक्ड. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट बहुत ये जो भी रिलेशनशिप होता है इन कंपनीज का एंड बी स्कूल का, जो भी टॉप बी स्कूल्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है. दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रैपो, एंड देयर आर मेनी alumni in those companies from those campuses as well. So when the college reaches out to those alumni, they are very keen to help the
students who have missed out on placement. So it never becomes a matter of concern, at least until and unless these colleges have a great relationship with the company. It does not become a matter of concern anywhere. एंड एक और सिनेरियो है, 2008 में भी ये सिनेरियो हुआ था व्हेन कंपनीज डिड नॉट कम, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो. वहाँ पर लोग PSUs में प्लेस हुए थे. इवन फ्रॉम IIMs द PSUs हैड टू कम इन टू कंप्लीट द प्लेसमेंट. बहुत बहुत ही सिचुएशन वर्स थी तब तो. एंड इवन दोज पीपल हु वेर हायर्ड इन डिफरेंट कंपनीज डिड नॉट गेट द बेस्ट प्लेसमेंट्स प्रॉब्ली आफ्टर IIMs डिड वेरी वेल in their life as well. If you see alumni, if I see the alumni from the 2008 2009 batches of IIM Ahmedabad, they did amazingly well in their life as well, even though their campus placements were not the best. So reality check ये है कि yes, the market conditions are not the best. The companies are not hiring in large numbers. So obviously there is a crunch there, and it's happening for everyone, not only for MBA colleges, across sectors, even for engineering and all other sectors as well. This is true that companies are not hiring. Even for lateral switch, it is becoming very difficult to switch companies, get the required hikes and so on. And even the bonuses or the hikes that the companies are giving are not up to the standard. So it's happening everywhere. This cannot be denied that recession is kind of there. It's already, the US conditions are not good. It's coming, it's cascading to India as well. So ये आप deny नहीं कर सकते, and उसके लिए थोड़ा तो सफ़र करना पड़ेगा across B schools हो, कोई भी campus हो, ये थोड़ा सा issue तो रहेगा. But the thing is that to go to that extent to say that degree ही irrelevant हो गई, या फिर B schools में जाना, you cannot pay back the loan and everything, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. These are kind of exaggerations. जो placements है वो definitely होंगे. Yes, it might get a little bit more difficult, and sometimes it might happen that आप जो package expect कर रहे थे शायद आपको final placement के टाइम वो नहीं मिले, but final placement अभी जो internship batch है उसके लिए एक और साल दूर है वो. So they might not be thinking so far ahead as well. But yes, the thing is, market conditions are tough, but there is no sign of concern, at least from the top B schools at this point of time. There is no sign of concern at all. So please आप ये knowledge किसी को भी अगर आपको आके कोई बोलता है तो इनको दे देना कि वो जो 80% था that was within the stipulated period. Extended period में all the students will get placed. Probably अभी तक वो लोग place हो भी गए होंगे. I do not have the recent updates, but probably they are already placed, and they will be placed in very good companies. And just remember this one thing: whenever someone tries to trick you or put you in any other stance, education is important and will be important in future as well. It carries a sign of credibility, and that will be true for the coming years as well. It's not going away anytime soon for sure.